साल 2024 अक्टूबर, जब मैं पूरी घूमने गया और वहाँ पे एक इवेंट ने मेरा पूरा जिंदगी बदल दिया। चलो बताता हूँ कैसे। तो जिस दिन मैं घर वापस आने वाला था उस दिन सुबह मैं गया नहाने समुंदर पे, और वहाँ पे दोस्तों के साथ नहाते नहाते एक अचानक से लहर आया और मुझे पीछे लेके गया डेंजर जोन के बाहर। सुनने में थोड़ा झूठ फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। आई वॉज अनएबल टू सर्वाइव एट दैट टाइम। मैंने बहुत कोशिश किया बाहर आने का, लेकिन तब तक मैं बहुत दूर जा चुका था। आफ्टर सम टाइम just the lifesavers came to me and bring me out from that zone. उसके बाद मैं घर आया, लेकिन किसी को कुछ बताया नहीं। पता नहीं था कि वो चीज़ एंजाइटी में बदल जाएगा। उसके बाद मुझे एंजाइटी अटैक्स आने लगे, मैं डिप्रेशन में चला गया। आफ्टर सम टाइम विथ मेडिकेशन थोड़ा सा कुछ ठीक होने लगा, लेकिन डाइजेस्टिव इश्यूज आने लगे और एक टाइम के बाद मुझे हॉस्पिटलाइज होना था। एंजाइटी में हार्ट बीट तेज हो रहा था। देन आई रियलाइज्ड हर एक चीज का एक होमियोस्टैटिक बैलेंस होता है, और जो खुद से सबको ठीक कर रहा होता है, इन केस ऑफ बॉडी, इन केस ऑफ आर्ट, ये खुद को ठीक कर रहा होता है। और in this phase you will go through a disaster। खैर जो भी हो, उसके बाद मैंने एक जॉब क्रैक किया, लेकिन वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुए जो मेरे खिलाफ था, और तो I had to leave the job। Then it was the last semester of college। कैसे करोगे, क्या करोगे? अब लाइफ है, चलता रहता है। खैर जो भी हो, everything has been done, but now it's our turn to change our life। So I am going to take a 30 days challenge with all of you, where I could be accountable every day for what I am doing, and I'll going to show myself up how I am going to develop myself every day। So in this phase we are going to do 5 things every day। Firstly, we are going to work out 30 minutes every day। It could be cycling, it could be running. For me it is free hand exercise, and for you it could be any kind of sports, but go out and work out for some times, because physical health is as important as your mental health। ये दोनों हेल्थ, जब कभी ऐसा होगा कि दोनों हेल्थ एक साथ खराब हुए, तो शायद ही। Secondly, so we are going to journal every day after waking up and before going to bed। We will just write what we are going through the day, what we have learned, everything, and after waking up we will just finalize what we are going to do for the day and what are our tasks for that day। हम लोग एक टू डू लिस्ट बनाएंगे सुबह, जिसमें हम लोग ट्रैक कर रहे होंगे कि पूरा दिन हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। थर्डली, नो स्क्रीन टाइम, सोने से पहले और उठने के बाद एटलीस्ट 1 आवर, क्योंकि ये वक्त पे हम लोगों का सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, और हम लोग ब्रेन को जो फीड कर रहे होते हैं सबकॉन्शियस माइंड उसको फीड कर लेता है बहुत जल्दी। और इस टाइम में हम लोग जब कंज्यूम कर रहे हैं नेगेटिव कंटेंट, which contents have no importance in your life, just don't go for it। सुबह उठने के बाद और रात में सोने जाने से पहले कंटेंट हम लोग नहीं कंज्यूम करें। I used to hear the affirmation at morning and at night by Sandeep Maheshwari sir। I do refer you guys, if you guys want to
just listen, but but you can download it at YouTube and just listen every day. It have a good result and it will give a positive impact in your life. At number 4, we are going to dedicate at least 1 to 2 hours to developing our skills, learning a new skill to boost our productivity. we हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग सीखेंगे. For now, the skill for me is content creation and video editing, जो मैं अभी सीख रहा हूँ. Content creation and as well as video editing and how to just scale up my content and audio editing, thumbnail designing, everything. So just give 2 hours for yourself, and in this hour don't do any multitasking like using phone or something. Just in this time silent your phone and do what you are doing with passion. And now comes to the last one, the 5th one, which is we are going to study a book every day. For तुम चाहो तो 10 पेज पढ़ सकते हो, तुम चाहो तो 5 पेज पढ़ सकते हो, लेकिन हर दिन एक बुक पढ़ो. For me, now we are going to just read Power of Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. तो मैं ये पढ़ने वाला हूँ. I know every day after working for the whole day we sometimes feel burnout, but if you are feeling burnout, just give 20% of your power and read. If you read 10 pages every day, just read 2 pages. If you just read 5 pages, then just read 1 page, but maintain the consistency every day. That is it. That is the meaning of consistency. Consistency doesn't mean you have to read every day 5 pages and like when you feel burnout you have to give your 100%. Yeah, if you can, it's very good, but if you are not able, just give a little of your power and do your tasks. And now some comes to extra tips, which are bind your screen time in 4 hours every day. 4 घंटे से ज्यादा फोन मत चलाओ, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. Secondly, take enough water every day, at least 4 liters every day. Stay hydrated, because in the summer our electrolytes just fall. So just take enough water and stay hydrated. And thirdly, go to bed. Try to go for bed at 12 and wake up at 7, because this time is actually good. Although it's 1 and 10, I'm making this video because from yesterday, because I have to start the challenge from tomorrow. That's why I have to edit it and just get it posted by today. Now for the next 30 days, I'm going to post each and everything with you guys, and I'm going to show up what I've learned every day for these 30 days through Insta Reels and YouTube Shorts. So if you want to join me in this journey, just comment in the video I am in, and you can just press the hashtag like the ultimate me over Instagram, and you can tag me over there and just start this challenge, because hopefully it's your time, it's my time to improve. Just boost your productivity. Don't let your comfort zone kill you. Show up every day and take this challenge. So that is it. You can follow me over Instagram at afarahun and just use the hashtags, and subscribe my channel for more videos. I'll try to show up every day with new productivity videos and this 30 days challenge over Reels and Shorts. So if you like this video, just leave a comment in the leave a comment at the below, and
मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड सी यू, हैव अ गुड डे। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। Secondly, we're going to journal every day before waking up. अरे before waking up नहीं